जम्मू काश्मीर में अलगाववादी नेता द्वारा पाकिस्तान और आईएसआईना झंडा फरकाववामां આવ્યા। मोटी संख्या में अनेक लोग एकठा थया हता अने पाकिस्तानना झंडा तेमज आईएसआईएसना झंडा फरकाववामां આવ્યા हता। तो કેટલાક લોકો हाफिज सईदना फोटा साथे प्रदर्शनो करवा रस्ता पर निकळ्या हता, जे दरमियान आर्मीना जवानोए तेमने हटावવાનો प्रयास कर्यो हतो। जो कि रस्ता पर आईएसआईएस अने पाकिस्तानी झंडा फरकावनारा अलगतावादी नेताओए आर्मीना जवानों पर पत्थरमारो कर्यो हतो, जेना कारणे सेनाना जवानोने लाठीचार्ज करवानी पण फरज पड़ी हती। श्रीनगरमां जुम्मानी नमाज बाद आ झंडा फरकाववामां આવ્યા હતા। બેનર્સ પર લખ્યું હતું આઈએસઆઈએસ ખૂબ જ ઝડપથી આવી રહ્યું છે। અલગાવવાદીઓ અને સેના વચ્ચે આ બાબતને લઈને ઘર્ષણ પણ સર્જાયું હતું। નોંધનીય બાબત છે કે એક તરફ જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાનની દોસ્તીની વાત થઈ રહી છે, તાજેતરમાં જ ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પાકિસ્તાનની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી, તો બીજી તરફ સરહદ પરનો પ્રશ્ન સળગતો અને દર વખતની જેમ આ વખતે પણ झंडा फरकावવામાં આવ્યા છે। कोर्ट में जाने का हर किसी को हक है, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन कौन जा रहा है वो देखना है। ये कोलिशन पार्टनर जा रहा है और ये तो इंडिकेट कर रहा है कि हाउ कॉन्ट्रोडिक्शंस और कियास और कन्फ्यूजन कितना है इस कोलिशन गवर्नमेंट में। ये कहते हैं एजेंडा ऑफ अलायंस, दे आर नॉट एडहरिंग ऑन द एजेंडा ऑफ अलायंस।